हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो जी आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है 12 ग्रेट इन्वेंशन वी शुड थैंक इंडिया फॉर। वाओ यार, कुछ इन्वेंशन हम देखने वाले हैं इंडिया से रिलेटेड। आप में से कोई गैस करेगा क्या इन्वेंशन हो सकती है? मुझे ऐसा लगता है मुझे एक आधी कोई पता है शायद। क्या? कुछ यार वो जो हमने पुराने जमाने में देखा नहीं था, बटन और हाँ, बटन, शैम्पू, प्लास्टिक सर्जरी जो है वो भी फर्स्ट टाइम हमने उसमें देखा हुआ है, वो इनक्रेडिबल इंडिया में हाँ, या उसमें थोड़ा बहुत जो है इस तरह का देखा हुआ है। अब देखते हैं व्हाई इंडिया इज ग्रेट, वाई इंडिया इज ग्रेट या इनक्रेडिबल इंडिया, इनमें भी हमने देखा हुआ है। तो अब आज वाली जो है वो स्पेसिफिक यही टाइटल है, तो बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलने वाला। करते हैं स्टार्ट, डिस्कशन होने वाली है हमेशा की तरह। अमेजिंग एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ब्राइट साइड। We all know that India is one of the oldest civilizations in the world, with a super rich culture and history. But did you know that some of the stuff you use every single day was invented in this country? From the buttons on your shirt to the shampoo in your shower. Watch this video till the end to find out what brilliant things we can thank India for. Oh, and don't forget to subscribe to our channel and turn on post notifications to keep up with our updates. Alright, number 1. The zero. Zero, शून्य. People in ancient times had always thought that there should be some sort of a sign to indicate nothing. Well, their worries were put to rest in the 5th century AD, when Aryabhata, an Indian genius of math and astronomy, invented the zero as a symbol to represent nothing. इतने सालों It made addition, subtraction, and a slew of other mathematical operations a whole lot easier. You can see the oldest zero in existence carved in the wall of a temple in Gwalior, India. If you're not a big fan of math and the invention of zero seems like nothing too important to you, just think, without it, we would have no binary system and no computers. How do you like that zero now? Number 2. Rulers. The Indus Valley Civilization was using rulers in 1500 BC and earlier. 300 BC. Made from ivory, these rulers were found during excavations in what is present-day Pakistan and northwestern India. Apparently, they were widely used in architecture with pretty amazing accuracy. They had units corresponding to 1.32 inches that were marked with extremely precise subdivisions within 5,000th of an inch. Number 3. Chess. This all-time top game for intellectuals is also an Indian invention. Its ancestor was called Chaturanga, and it was a strategic board game popular during the Gupta Empire around 6th century AD. Like the chess we know today, this game had various pieces with different value and capabilities. It also had an important king figure, and winning the game depended on the fate of the king. Another popular board game brought to us by India is Snakes and Ladders. The original version was called Mokshapan, and it was invented by a 13th century poet and saint by the name of Gyandev. 13th century. The snakes stood for vices, while ladders were virtues. During India's time under British rule, the game made its way to England and later to the US. Number 4. Plastic surgery. इसका था. In the 6th century BC, an Indian physician named Sushruta created a huge reference book on medicine and surgery. It was one of the world's earliest works of its kind. Sushruta, often called the father of surgery in his home country, described the use of hundreds of medicinal plants and instructions for performing surgical procedures, including nose reconstruction and skin transplantation from one part of the body to another. The original method of rhinoplasty that involved taking a piece of skin from the forehead to reconstruct the nose is even still used today. But back then, nose jobs were done to help people who had been deprived of their noses as a punishment for theft or adultery. Ooh, how times have changed. Number 5. Cataract Surgery. Sushruta not only invented plastic surgery, but also performed the first cataract surgery. Wow. He used a curved needle to remove the lens from the affected eye. This revolutionary procedure
soon became popular outside of India. Patients and doctors from around the world visited the surgeon to get operations done and learn from his experience. The genius surgeon never turned anyone away. He said that he got all his knowledge from the god of Ayurvedic medicine, Dhanvantari. Number 6. Wireless communication. When you think of the pioneer of radio communication, Guglielmo Marconi probably immediately comes to mind, and that's for good reason, of course. He even received the Nobel Prize in Physics in 1909 for his innovative work. But Sir Jagdish Chandra Bose presented his discovery of radio communication waves to the public in 1895. He sent an electromagnetic wave across 75 feet at the town hall in Calcutta. The wave passed through walls, rang a bell, and ignited some gunpowder. Marconi used Bose's invention, the mercury coherer, as a pattern to build his operational two-way radio. Bose never patented his work, so he was only credited for his discovery a century later. Number 7. The USB. Oh, The USB, or Universal Serial Bus, is a way more recent invention than wireless communication, of course. It was brought to us by Ajay Bhatt, an Indian-American computer genius that was working as an engineer for Intel back in the 1990s. He came up with the idea of a universal port for devices as he was putting an SD card into his computer. Remember those things? The device instantly became a huge hit. Bhatt himself didn't get money or official recognition for his invention, as he's always insisted that it was the result of teamwork. wow. Today, the amount of USB devices used worldwide is over 10 billion items, making it the most used computer gadget out there. Number 8. Yoga. Yoga. Hit that like button if you've ever tried yoga. I have. If you keep practicing it and see the positive changes in your life, India में काफी then you लोग should करते thank हैं। India for it. The first yoga guru was Lord Shiva, also known as Adi Yoga. People in northern India were practicing this spiritual exercise over 5,000 years ago. The word yoga was even mentioned in the Vedas, India's oldest sacred text. The Brahmins further developed the art of yoga and documented their experiences in a treatise with over 200 records. Indian Prime Minister Narendra Modi came up with the idea to celebrate Yoga Day on June 21st, and it's now an actual international holiday with millions of followers. Number 9. Natural fibers. Nothing feels better than the touch of natural cotton on your skin. We could have been deprived of this situation if it weren't for the bright minds of India. Unlike the ancient Greeks, who wore animal skins, the Indians started cultivating cotton back in the 5th and 4th centuries BC. They used cotton threads to produce fabrics that soon became a huge hit in the Mediterranean and beyond. Jute and wool also have their origins in India. And flush toilets were one of them. Believe it or not, home toilets connected to a complicated sewage system with canals, irrigation, and smart water management existed in the land of spices over 5,000 years ago. Pure genius. Number 11. Shampoo. Shampoo, इसका भी मुझे पता था। The word shampoo comes from the Hindi word shampoo, which means to massage or knead. The substance was invented in India in 1762 and was originally used for head massages, hence the name. The first shampoo was made of natural oils and herbs. British colonial traders fell in love with the idea and brought it back with them to England. It took years for the original head massage oil to evolve into shampoo as we know it today. But fact is fact. You have the Indians to thank for the beauty and cleanliness of your hair. Number 12. Buttons. Buttons. This clothing staple is at the top of our list. So simple yet revolutionary, the first buttons were found during excavations in Mohenjo-Daro, one of the largest settlements in the Indus Valley Civilization, yet again.
Over 5,000 years ago, buttons were made of seashells and used as an ornament and not for fastening clothes. But they had 2 holes in the middle right from the start. So, are there any inventions on the list that you can't live without? Let's discuss it in the comment section. वाओ, एक ना मैंने जबरदस्त। वो भी सुना था, ये नेविगेशन भी, हाँ ये हाँ वो भी इन्वेंशन है इंडिया से। इंडिया की जो है वो और इन्वेंशन ये जो इन्वेंशन है हजारों साल पहले इन्वेंट की गई बिल्कुल हैं। ऐसा ही है। इवन कुछ चीजों में तो ऐसा दिखाया जैसे उनको क्रेडिट भी उस तरह से नहीं दिया इसलिए गया, ना, बाद हाँ। में उस चीज से इम्प्रेस होके और लोगों ने इन्वेंट कर ली चीजें और उनको क्रेडिट जो है वो दे दिया गया, तो ये काफी सैड बात है। बट रियलिटी जो है वो तो अब छुप नहीं सकती। सर्जरी दिखाई थी उन्होंने। यार उस टाइम पे किस तरह से, मैं तो प्लास्टिक बहुत सर्जरी पे ही कमाल हैरान थी, होती थी, हाँ। इतनी सेंसिटिव सी आई सर्जरी जो है वो भी उन्होंने दिखाई पे शून्य जो है। तो जस्ट इमेजिन उस टाइम क्या लेवल होगा एजुकेशन वही का तो इंडिया कह रही हूँ में। मैं। तभी तो मैं एक वीडियो में मैंने देखा था कि दुनिया की सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी इंडिया में थी, और उधर से जब बुक्स चोरी हुई ना, तो 3 महीने तक उनको जलाया गया। 3 महीने तक आग जलती रही, इतना बिल्कुल। नॉलेज था। उसके अलावा आज के दौर में शायद और कितना ही नॉलेज होता। हाँ। वो बुक्स जिनकी कोई कॉपीज भी नहीं थी, वो एक एक ही बुक थी, वो उस टाइम पे जो सारी काफी डाटा डाटा जो है और वो इंडिया रिमूव हो शायद गया। सेंटर था एजुकेशन का, मतलब पूरी दुनिया से लोग आते थे। ये बिल्कुल। मैं बता रहा हूँ हजारों साल पहले की। इतना लेवल उस टाइम ही हाई था, तो अब ये क्या चीजें बात है। रेगुलर हम यूज करते हैं, यूएसबी है, शैम्पू है या बटन बटन है। है, लेकिन कभी माइंड इस तरफ गया ही नहीं कि यार ये आखिर ये इजाद किसने की है। हाँ। तो ये आज पता अच्छा, चला सीढ़ी की वीडियो गेम में। भी। हाँ शाम यार, को वो चेस- कैसे भूल गए। चेस बोर्ड जो है साम सीढ़ी वाली गेम है जिसको हमने इतना एंजॉय अपने बचपन में भी किया, बस स्टिल अभी भी खेल लें तो यार बड़ा अच्छा लगता अच्छा है। यार, इसमें ना कोई ना एक आइटम फूड की भी होनी चाहिए थी जो इंडिया में इन्वेंट। होगा कुछ ना कुछ। जैसे बहुत सारी inventions छोले लेकर- भटूरे भी हो सकते हैं या पानी पूरी, ये मतलब और एक तरह ऐसी के एक आइटम होनी चाहिए थी कि फूड की भी। हाँ ये तो है। क्योंकि बाकी फूड तो ऐसा ना कि वो तो एक मतलब कह सकते हैं एक एरिया वाइज होता है, तो वो इन्वेंशन नहीं कह सकते उसको। वो स्पेसिफिकली हाँ। होता है ना, एरिया वाइज हाँ डिवाइड बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अच्छा, वो ये- यूएसबी का बता रहे थे कि उन्होंने वो क्रेडिट भी नहीं लिया, मतलब उन्होंने कहा था ऐसा ये ये टीम टीम वर्क वर्क है। है। हाँ ये भी उन्होंने दिखाया। और मेरे हिसाब से ऐसी बहुत सी, क्योंकि ये तो वीडियो है ना, हाँ, शॉर्ट वीडियो थी जिसमें मुझे 12 का ऐसा- बताया, हाँ। ऐसी तो मुझे लगता है हजारों हाँ, आइटम्स मैं वही कह रही हूँ, होंगी। बहुत सारी होंगी, ये तो सिर्फ सेलेक्टिव उन्होंने बिल्कुल। दिखाई है। और वाकई यार उनको उतना क्रेडिट भी नहीं मिला। बिल्कुल ऐसा। स्पेशली वो जो मैं आपको बताया ना, जो बुक्स को बर्न किया हाँ, गया ना, उसमें उसका ये बड़ा तो दुख है है। मुझे, क्योंकि शायद इस टाइम दुनिया का नक्शा ही कुछ और होता। ऐसा ही है। और इवन जिनका वो सर्जरी वगैरह का बता रहे थे तो कहते थे कि दूर दूर से डॉक्टर्स उनसे सीखने के लिए भी आते थे, उन्होंने कभी किसी को इनकार नहीं किया। ये भी बहुत ज्यादा जो है ना वो Knowledge को अच्छी फैलाया बात है। साथ हाँ साथ। नॉलेज को जो है ना वो फैलाया, तो जबरदस्त, बहुत अच्छी रही, बहुत इन्फॉर्मेटिव रही वीडियो। एक दो चीजों का पहले पता था बट ज्यादा चीजें 2-3 ऐड का ही ऑन पता हो था, गई। हाँ बाकियों का नहीं बाकी पता। सारी जो है वो ऐड ऑन होगी। मैं वो शून्य की भी बात कर रही हाँ, थी। शून्य का भी था पता हाँ हमें। तो वो भी काफी और ज्यादा- देखो मतलब क्या थिंकिंग का लेवल है कि अगर आपके पास कुछ नहीं तो उसको किस उसको तरह भी इन्होंने हाँ, एक्सप्रेस explain किया करने जाए। के लिए कुछ हाँ होना तो चाहिए। वो भी उसके अलावा जो स्केल होते हैं रूलर्स, स्केल, वो हाँ, भी जो है काफी चीजें ऐड ऑन हुई हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग रही वीडियो। और वो हम नॉर्मल लाइफ में भी अभी भी यूज करते हैं। बिल्कुल ऐसे। अब तो जब जब घर में दोबारा यूज करेंगे तो याद एक दफा आएगा, बिल्कुल, जरूर हाँ। सोचेंगे कि यार ये कहाँ की इन्वेंशन थी। आई होप आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See ya.